Hello, dear children. Now it's time for the next page, page number 31. It's adjectives. Okay, so this is the part, remember, right? There are some adjectives which can be used both as adjectives of quantity and adjectives of number. Okay, there are some adjectives which can be used as in quantity also and as a number also. So which are those adjectives? Notice the use of the adjectives in these sets of sentences. Now you just observe all highlighted words here. Okay, she has enough strength. The camel drank all the water. He has enough pens. Ben ate all the cookies. Okay, now you need to just observe the nouns carefully, then you will get to know why we are talking about quantity or numbers here. स्ट्रेंथ को आप क्वांटिटी में काउंट कर सकते हो क्या? 1 स्ट्रेंथ, 2 स्ट्रेंथ्स, 3 स्ट्रेंथ्स? नहीं. स्टिल वी हैव यूज्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इनफ. बट सिमिलरली वी हैव यूज्ड द एडजेक्टिव इनफ फॉर अ थिंग विच कैन बी काउंटेड, काउंटेबल नाउन. मतलब पेन्स को तो काउंट कर सकते हो ना, राइट? 1 पेन, 2 पेन, 100 पेन्स, 1000 पेन्स इन अ शॉप, राइट? So enough, this word goes with both countable and uncountable nouns. Okay, so it belongs to both. Similarly, all can be used for water. All can also be used for countable cookies. Cookies तो खाया जाता है ना, so you can count them. So this is how adjective of number can be used in both the places with both the nouns. दोनों nouns को qualify करने के लिए आप use कर सकते हो. Okay. So the adjective in the first sentence of each set answer the question how much. Okay, first sentence of each set answer how much. They qualify uncountable nouns and are adjectives of quantity. Okay, they qualify water uncountable है, strength भी uncountable है. So that is the reason all and enough both ये adjectives of number होने के साथ साथ they can be used with adjectives uncountable nouns. Okay, so the same adjectives in the second sentences of each set, means second sentences कौन से? ये वाले और ये वाले, this one and this one, these two are the second sentences. Okay, answer the question how many. Okay, now I will explain you the difference between how much and how many. दे क्वालिफाई काउंटेबल नाउन्स, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. पेन्स और कुकीज़ दोनों काउंट कर सकते हैं. नाउ व्हाट आई हैव कमिटेड यू, आई टोल्ड यू दैट आई विल शेयर यू द डिफरेंस बिटवीन हाउ मच एंड हाउ मेनी. हाउ मेनी इज़ यूज्ड ओनली विथ काउंटेबल नाउन्स, जिसे आप गिन सकते हो. यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन हाउ मेनी पेन यू हैव, हाउ मच पेन यू हैव, रॉन्ग. हाउ मच मनी यू हैव, हाउ मेनी मनी, रॉन्ग होता है, ठीक है. How many books you have, but how much milk you have. Milk uncountable है. एक मिल्क, 2 मिल्क ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं, बिकॉज इट्स अ लिक्विड. ऑल द लिक्विड्स आर अनकाउंटेबल नाउन, तो उसको हाउ मच में आएगा वो. स्ट्रेंथ, वाटर, हाउ मच, विच कैन बी काउंटेड. 1 पेन, 2 पेन, 1 कुकीज़, 2 कुकीज़, 1 बुक, 2 बुक्स, 100 बुक्स, 1 डोर, 2 डोर, 100 डोर्स, 1 विंडो, 2 विंडो, 100 विंडोज़. अनकाउंटेबल थिंग्स, बहुत सारी चीज़ आप कितने भी नंबर्स में जिसे काउंट कर सकते हो. सो ऑल आर काउंटेबल नाउन, जिसे आप गिन सकते हो. सो यू नीड टू आस्क क्वेश्चन हाउ मेनी इन दैट केस. फाइन. नाउ हियर कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग द एडजेक्टिव्स फ्रॉम द बॉक्स. सो बॉक्स इज गिवन हियर. सम सेंटेंसेज हैव मोर देन 1 करेक्ट आंसर. सम सेंटेंसेज हैव मोर देन 1 करेक्ट आंसर. ओके, so let's see what are those more than 1 correct answer. Much, many, few, less, some, any are the options, and you can use more than 2 words. There are few options available in the market. There are some options available in the market. Both ways में बोला जा सकता है इसको. She has been working all day. She hasn't much energy left. अब energy countable है क्या? नहीं है. इट इज़ अनकाउंटेबल. 1 एनर्जी 2 एनर्जी कभी काउंट हो सकता है पेन की तरह, 1 पेन 2 पेन की तरह नहीं हो सकता. सो मच इज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल. ओके, सो आई यूज्ड मच हियर. आर देयर डैश मैंगोज इन द रेफ्रिजरेटर.
Are there some mangoes in the refrigerator? Okay, are there some mangoes? Are there few भी जा सकते हैं उसके साथ. Fourth one. Only very few children attended the class today. Okay, only very few is the appropriate, यही उसके साथ. Okay, less children नहीं जाएगा, only few is applicable here. किसी में एक ही आ सकता है, किसी में एक से ज़्यादा applicable हो सकते हैं. So rest will be done by you. 5th, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th should be done by you. Okay, so you need to do it. What is there in the next page? Let's see. Okay, this is very interesting. Do you remember this topic? We have already covered this topic in the lesson of pronoun. Okay, so demonstrative adjectives, demonstrative pronoun, we have already done this if you remember. Have you noticed these sentences? This umbrella is leaky. These cakes are full of vanilla. That jacket is from Shimla. Those soldiers built the bridge. Okay, so notice the adjectives in color in each of the sentence. What are the adjectives? This, that, these, those. This और that दोनों singular होते. These and those both are plural. This is for near and they are for far. Okay, point out specific nouns. ये किसी स्पेसिफिक नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए आप उंगली से इशारे से भी शो कर सकते हो या फिर बता भी सकते हो, ओरली भी. ओके, सो सच काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. बट व्हाट आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? हम लोगों ने ये कर चुके हैं प्रोनाउन वाले लेसन में. यू विल हैव टू लिसन टू इट वेरी केयरफुली. अगर तब नहीं समझा होगा, अभी ध्यान से सुन लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा. Remember, this, that, these and those can act as both demonstrative adjectives and demonstrative pronouns. As adjectives, these four words are followed by nouns. As adjectives, these four words are followed by nouns. Okay, so let's see. ये जो word है followed by nouns, it is very important. Means adjective वाले जो word होते this or that, these and those, उसके ठीक बाद क्या आएगा? नाउन आएगा. इन दैट केस दे विल बी नोन एज एडजेक्टिव्स. चलो एग्जाम्पल देखते हैं. एज एडजेक्टिव्स, एज प्रोनाउंस. लेट्स डिस्कस अबाउट एज एडजेक्टिव्स. दिस असाइनमेंट इज ऑन रिवर्स. दिस इज द असाइनमेंट ऑन रिवर्स. इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? दिस के बाजू में इज आ गया, दिस के बाजू में एक नाउन आ गया. याद आया कुछ? I had told you right after a demonstrative pronoun. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे ही दिखता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव रहेगा. कब रहेगा? ठीक उसके बाद अगर कोई नाउन है. राइट आफ्टर दैट इफ देर इज़ अ नाउन देन इट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. बट इफ राइट आफ्टर अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उसके बाजू में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वर, देन इट शुड बी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ओके, सो ये सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से रीड करो, आपको और ध्यान में आ जाएगा. एंड आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दिस. फाइन. So this was the task here. That book is my favorite. That is my favorite book. That book. That के बाद noun आ गया. और एक बात ध्यान में रखना. One thing you should take care is आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझने. Then understand noun and pronoun properly. Listen to all the videos of nouns and pronouns properly. If you don't know how to identify a noun, you will not understand what is adjective, what is pronoun. And if you don't know noun and pronoun both, adjective भी नहीं समझ में आएगा. So each and every topic of grammar is linked with each other. एक दूसरे से connected है. That thing you should take care of. Okay. So that book is a noun. That is a verb. So that is the reason it is adjective and it is a pronoun. Fine. So here what is the underline the demonstrative adjective and demonstrative pronoun को circle करना है. So demonstrative pronouns should be circled, demonstrative adjectives should be underlined. So इसको circle क्यों बनाया? क्योंकि this के बाजू में क्या आ गया? Is is a helping verb. Okay, why have I underlined here those girls? Because girls are noun और those ये जो word है वो girls को qualify कर रहा है. So that is the reason it is adjective. Similarly ये सारा बाकी का हमने किया हुआ है, बचा हुआ आपको करना पड़ेगा. Rest should be done by you. Okay. Let's see what is next. So this is the remaining part which you need to finish. Okay, so now see what is there to learn here. Something is there. Learn.
अभी लर्न क्या करना है, नोटिस द एडजेक्टिव्स इन कलर इन द सेंटेंस. लिव इट, इट्स माई पेन. ओके, माई पेन. माई इस प्रोनाउन के ठीक बाद क्या है, एक नाउन है इसलिए एडजेक्टिव है. एंड माई दिस वर्ड इज कलर्ड ऑल्सो, चलो ऑब्जर्वेशन हो गया. देयर बंगलो लुक्स ब्यूटिफुल. देयर इज हाईलाइटेड वर्ड, हाईलाइटेड है कलर से किया हुआ है उसको. सो देयर बंगलो, ठीक है, उसके बाद नाउन है. सो इट इज़ नथिंग बट अ adjective, but an adjective. Why is it an adjective? Because right after that there is a noun. Show belonging are called possessive adjective. Fine. Why are they possessive adjectives? Because it shows belonging. Belongingness means आपको पता है अपनी खुद की कोई चीज़ होना. याद है, I have explained you, having your own thing is known as possession. So such adjectives are possessive adjectives. Now let's discuss the difference between possessive adjectives and possessive pronoun. Okay, possessive adjectives and possessive pronoun. Notice the word in color in each sentence. This is her purse. This purse is hers. This is her purse. This purse is hers. The word her in the first sentence has been used to qualify the noun. Purse, it is a possessive adjective that shows who the purse belong to. किसकी पर्स है हमको पता है. That is the reason we know to whom does this purse belong to. Okay. In the second sentence, the word hers has used in place of a noun. It is a pronoun that shows belonging. It is possessive pronoun. ज़्यादा कुछ हेडक नहीं है. Okay. It is so simple to identify a possessive adjective and possessive pronoun. Okay. Possessive adjectives and possessive pronouns. My, your, his, her, its, are, their. इन सब में और नीचे वालों में क्या फ़र्क है. Downward are all pronouns and above are adjectives. Why? Because when you will say my pen, you will never say mine pen. बोलोगे क्या mine? Because mine is possessive pronoun. Will you say इसमें सेकंड their bungalow, theirs bungalow wrong sentence बनेगा. theirs bungalow, it is totally a wrong sentence. Why is it a wrong sentence? Because their bungalow is an adjective. their word जब ऐसे ही आ गया their, so it's an adjective. theirs कभी नहीं होता. theirs bungalow, theirs, this word always comes at the end of the sentence. See, I'll show you the example. This is her purse, the purse is hers. So hers, this word always comes at the end, and जब भी s लगता है किसी प्रोनाउन को, then it is possessive pronoun. But when you show a possession, और possession show करने के लिए आप ये words यूज़ करोगे और ठीक उसके बाद एक noun लिखोगे their bungalow जैसे कि, so it is possessive adjective. Okay, this is possessive adjective. This is how simply you need to identify the possessive adjectives. Okay, your answer was not satisfactory. Your answer was not satisfactory. Okay, what is the difference between yours answer is wrong sentence, it should be simply your answer. s कट कर दिया इसमें से और your answer लिख दिया, and this becomes possessive adjective क्योंकि प्रोनाउन के ठीक बाद में नाउन आ गया. सो टोटली दिस वर्ड बिकम्स एन एडजेक्टिव. सिंपल है, इससे ही आपको आइडेंटिफाई करना है. ओके, दैट्स इट. फाइन. सो दिस इज़ द लास्ट पेज विच यू नीड टू डू. आई हैव डन फर्स्ट एंड थर्ड फॉर यू. थर्ड वन ऑल्सो विल बी डिस्कस्ड बाय मी. सी, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माइन प्रॉब्लम. ये माइन प्रॉब्लम क्या होता है? इट इज़ अ रॉन्ग वर्ड. ओके, इट शुड बी नॉर्मल प्रोनाउन हियर, माई प्रॉब्लम. दैट्स इट. You are not able to understand my problem. So here what you can do, you need to just change all these possessive pronoun into possessive adjectives. Each and every sentence has one possessive adjectives in them. जैसे first में yours था. Okay, so this particular word need to be this particular possessive pronoun था. Sorry, hers is also possessive pronoun, and here mine is the possessive pronoun. We are proud of mine country. Mine is also a possessive pronoun. Okay, so here theirs is also possessive pronoun, and one more is there, its dirty tail. Okay, across the carpet. Okay, so this is how you need to identify all the possessive pronoun, and you need to change the sentence. जैसे theirs है तो s हटाना है, hers है तो s हटाना है. So and simply change the sentence and make correct them. Okay, the way I have changed mine into my.
So that conversion is already mentioned here. Possessive pronoun my का mine होता है, your का yours, his, her, hers, its, ours, theirs. Done. Fine. So we have done with it, and I'll continue with the next pages in my next lecture. Till the time, complete your homework. Thank you so much. Take care.